IQSC કોઓર્ડિનેટર આદરણીય શ્રી મુખર્જી સાહેબ, ઈસી અને બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટના સર્વ આદરણીય સભ્યશ્રીઓ, જુદા જુદા ભવનના અધ્યક્ષશ્રીઓ, આવેલા સૌ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરશ્રીઓ, જુદા જુદા ભવનના અધ્યક્ષશ્રીઓ, અધ્યાપકો, અધિકારીશ્રીઓ, કર્મચારીઓ અને સૌ વહાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, આપ સૌનું હું સ્વાગત કરું છું, સૌને નમસ્કાર કરું છું. મિત્રો, આપણે સૌ ઘણા સમયથી સાંભળતા આવીએ છીએ NEP 2020. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ ઘણા વર્ષો પછી એક નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ આ દેશને આપી છે અને એ શિક્ષા નીતિ અંતર્ગત જે આપણા અભ્યાસક્રમના જે પરંપરિત અભ્યાસક્રમો તો ખરા જ, પણ એની સાથે સાથે ભારતીય જ્ઞાન પરંપરા અને વેલ્યુ એડેડ કોર્સ એ પણ એની સાથે સાથે ચાલે અને આપણી જે મૂળ ભારતીય શિક્ષણની જે સંકલ્પના હતી એ તરફ જવાનું એક આપણને દિશા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ આપી અને આપણે એને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એ નવી શિક્ષા નીતિ પ્રમાણેના અભ્યાસક્રમો શરૂ પણ કર્યા છે. આપણે આજે ઘણી બધી જે કેટલીક સમસ્યાઓ છે, ટ્રાફિકની છે, સાયબર ક્રાઇમની છે, આપણે સૌ એનો ભોગ બનીએ છીએ. આપણે આજ સભાખંડમાં શહેર પોલીસના ઉપક્રમે એમની સાથે રાખીને જ એક ટ્રાફિક અવેરનેસનો બહુ સરસ કાર્યક્રમ આપણે થોડા મહિના પહેલાં જ કરેલો અને એવો જ બીજો ઉપક્રમ આજે આપણે એ માટે સૌ ભેગા એકત્રિત થયા છીએ. આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી યુજી અને પીજી લેવલે એક નવો યુજીના સેમેસ્ટર 2 અને 4 અને પીજીના સેમેસ્ટર 1 અને 3માં આ એક નવો અભ્યાસક્રમ સાયબર એજ્યુકેશન એ દાખલ કરવા જઈ રહી છે. મને કહેતા આનંદ થાય છે કે આવો એક સરસ સિલેબસ વેલ્યુ એડેડ કોર્સ અંતર્ગત આ સાયબર એજ્યુકેશનનો આખો જે કોર્સ છે એ માનનીય ડીસીપી શ્રી પાર્થરાજસિંહ ગોહિલના માર્ગદર્શનમાં શ્રી મહેન્દ્રસિંહ ઝંકાટ, પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી, રિકિતાબેન પઢિયાર, પીઆઈ શ્રી મકવાણા મેડમ, કૃપાલસિંહ રાણા, આની આખી એક ટીમે એક આખો આ સિલેબસ છે, સિલેબસ તૈયાર કર્યો અને એ સિલેબસ આપણે એપ્લાય કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે આજનો જે ઉપક્રમ છે એ કોર્સનો પરિચય એનું એક એની આપણે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના આ બંને પીજી યુજીમાં દાખલ કરવા જઈ રહ્યા છે એ એક ઉપક્રમ છે અને એ પોલીસ સાથે રાજકોટ શહેર પોલીસ સાથે એનો MOU કરવા આપણે જઈ રહ્યા છીએ. એ આજનો આ કાર્યક્રમ છે. ત્યારે આખા કાર્યક્રમની શરૂઆત કરતાં પહેલાં હું દવેભાઈને વિનંતી કરું કે સર્વધર્મ પ્રાર્થના એ પ્રસારિત કરે આદરણીય દવેભાઈ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે હવે તો નેકના જે બધા ક્રાઇટેરિયા છે એમાં પણ થોડા ઘણા બદલાવ આવ્યા છે. ત્યારે પીજી લેવલે આવા વેલ્યુ એડેડ કોર્સ શરૂ થાય એ ખૂબ આવશ્યક છે નેકના સંદર્ભે પણ. અને આપણે IQSCના માધ્યમથી એ શરૂ કરવા, યુનિવર્સિટીના માધ્યમથી શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે
આઈક્યુએસીના કોઓર્ડિનેટર હું મુખર્જી સાહેબને વિનંતી કરું કે આવો અને સૌનું શબ્દોથી સ્વાગત કરી અને આ કાર્યક્રમની ભૂમિકા આપણી સમક્ષ મૂકી આપે. આદરણીય મુખર્જી સાહેબ. नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल. प्रोफेसर चंद्रवारिया जी ने बहुत अच्छी तरह से एक पूर्व भूमिका बांध ही दिया है सर आपने. मुझे सिर्फ ये इतना कहना है मंचस्थ सभा में एस्टीम्ड गेस्ट्स और गुणीजनों इस कार्यक्रम में आए हुए और स्पेशली स्टूडेंट्स जिनको ये वैल्यू एडेड कोर्स का सीधा ताल्लुक़ रहेगा कि इसका ये जो आज एक कार्यक्रम हो रहा है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इवेंट जब होता है उसका एक प्री हिस्ट्री होता है, एक प्रेजेंट होता है और उसका एक इफेक्ट होता है. तो नया एजुकेशन पॉलिसी जो लास्ट आया हुआ था वो 1986 में आया हुआ था और उसके बाद उसका एक अमेंडमेंट 1992 में हुआ था. और इस वाला जो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसे बोलते हैं, जिसको लागू करते हुए बिकॉज ऑफ द कोरोना टाइम्स वगैरह 2022 हर जगह पे हो गया. तो ये 30 साल का एक गैप एजुकेशन पे रहा और आप सबको पता है कि 30 साल एक बहुत बड़ा समय का पीरियड होता है जिसमें बहुत कुछ बदलाव आ जाता है. अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें तो 19वीं सदी में जब कृषि प्रधान इकोनॉमी से औद्योगिक इकोनॉमी की तरफ हम बढ़े, अराउंड 1850s के आसपास इंडस्ट्रियल लॉज बनने लगे और 20वीं सदी के शुरुआत में जब मोटर कारें आने लगी, हेनरी फोर्ड जैसे लोग या इंग्लैंड में रोल्स रॉयस कंपनीज, तो ट्रैफिक रूल्स, सड़क में कैसे क्या नियम व्यवस्था होनी चाहिए वो आने लगे. उसी समय के आसपास जब कमर्शियल एयरलाइंस बनने लगे तो एयर ट्रैफिक के रूल्स बनने लगे. वहाँ से अगर हम चालू करें तो साइबर वर्ल्ड जो है वो 21st सेंचुरी की रियलिटी है. आई थिंक पहला साइबर लॉ 2000 के आसपास ही गढ़ने में आया भारत में. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पूर्व भूमिका है. और दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जनरली सोसाइटी में कॉलेजेस होते हैं, फिर उससे हायर एजुकेशन अगर लेना चाहें तो यूनिवर्सिटी. तो जनरल एक परसेप्शन होता है लोगों के मन में कि यूनिवर्सिटी में एक इंटेलेक्चुअल लोग एक आइवरी टावर में अपना काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा पता होता है या नहीं. इसी तरह से अगर हम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट को देखें तो सचराचर जो लोग हैं जनरली इन द नॉर्मल वॉक ऑफ लाइफ हम लोग वी ट्राई टू अवॉइड. यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिंकेज हो रहा है बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड द पुलिस डिपार्टमेंट. ये लिंकेज ऐसा एक MOU होगा जिसका सीधा डायरेक्ट रेलेवेंस एक कोर्स के ज़रिए स्टूडेंट्स पे ये इनको पढ़ाया जाएगा और लर्निंग होगी. आजकल लर्निंग का ज़्यादा महत्व है रादर दैन टीचिंग, बिकॉज लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. टीचिंग जो है वो फॉर्मली होता है, कुछ सालों तक होता है वगैरह. बट एक्सपोजर जो ये 21st सेंचुरी का डोमेन है साइबर वर्ल्ड, इसका एक एक्सपोजर फॉर्मल तरीके से कोर्स के मुताबिक, जिसका फलस्वरूप एक सर्टिफिकेट भी होगा जो लोग ये कोर्स करेंगे, और ये एक वैल्यू एडेड कोर्स होगा. यानी कि आप जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसके अलावा एक वैल्यू एडेड चीज़ होगी जो आप आपके करियर में, स्टूडेंट्स लोगों के करियर में
एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडिशन होगा। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए दैट इज़ द रीज़न वाई आज का जो ये कार्यक्रम है, ये लिंकेज है, ये MOU है, इसका एक सिग्निफिकेंस है। और इस ओकेजन में ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी, ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, the police department, by the way, is the internal quality of any society when the armed forces take care of the external safety. Please note that this is I am talking addressing the students especially. हम लोगों को तो पता ही है. So इस nearly historic occasion पे I can say that this is a very important occasion happening on the campus, and on this occasion I very sincerely and humbly it is my privilege to welcome IPS Commissioner of Police Jha sir, IPS Deputy Commissioner गोहिल साहब, आपका पूरा टीम जो इसके पीछे लगे हुए थे। मैं झंकार साहब के साथ बात कर रहा था कि मुझे याद है उनके ऑफिस में भी गए थे हम लोग कानावार जी के साथ, एंड एक प्रोसेस के साथ ये शुरू हुआ था जिसका फलस्वरूप द प्रोडक्ट इज़ देयर टुडे। आप लोगों को एक स्क्रीन में भी ये भी दिखाया जाएगा जो कोर्स बना है ऑलरेडी, उसका एक क्विक स्क्रीनशॉट भी आप देख सकेंगे। देयर इज़ अ हार्ड कॉपी ऑल्सो। So on this occasion, I welcome, of course, I welcome our Honorable Vice Chancellor, sir, on this occasion. And we all have experienced that after Vice Chancellor, sir, recently took over, there is a sense of urgency. एक काम करने का, एक direction पे जाने का जो एक urgency है, जिसके लिए हम सबको तत्पर as a family, as a university family, हमको तैयार रहना पड़ेगा। वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी सर ने, एक सेंस ऑफ एनर्जी सर लेके आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, रजिस्ट्रार सर का स्वागत करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल। આભાર મુખર્જી સર। સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી પરિવાર રાજકોટ પોલીસનો નિઋણી છે એટલા માટે કે મેં વાત કરી એમ કે થોડા દિવસ પહેલાં જ સરસ ટ્રાફિક અવેરનેસનો કાર્યક્રમ આપેલો શહેર પોલીસે, અને આપણને 5 O આપેલા અકસ્માતથી બચવા માટેના: ઓવર સ્પીડ, ઓવરલોડ, ઓવર કોન્ફિડન્સ, આવા 5 O આપ્યા હતા કે આ 5 Oને તમે પકડી રાખશો તો અકસ્માતોથી બચી શકાશે। પણ આવો જ એક સરસ સિલેબસ આખો આપણને તૈયાર કરીને શહેર પોલીસે આપ્યો છે, એ માટે ફરીથી શહેર પોલીસનો આભાર માનું છું। અને આપણે મંચસ્થ મહેમાનોનું શાબ્દિક સ્વાગત કર્યા બાદ એમનું પુષ્પગુચ્છથી આપણે એમનું સ્વાગત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે સર્વપ્રથમ આ શહેરના પોલીસ કમિશનર શ્રી બ્રિજેશ કુમાર ઝા સરનું સ્વાગત કરવા માટે હું આદરણીય કુલપતિશ્રીને વિનંતી કરું કે તેઓ પુષ્પગુચ્છથી આદરણીય ઝા સરનું સ્વાગત અભિવાદન કરે। આભાર સર। આપણી યુનિવર્સિટીના UG PG લેવલના અભ્યાસક્રમોમાં અભ્યાસક્રમ દાખલ થાય એ માટેની જેમની એક તત્પરતા છે એવા આપણા આદરણીય કુલગુરુ શ્રી ડોડિયા સાહેબનું સ્વાગત કરવા માટે હું DCP પાર્થરાજસિંહને વિનંતી કરું કે કુલપતિશ્રીનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત અભિવાદન કરે। આભાર સર। આદરણીય ગોહિલ સાહેબનું સ્વાગત કરવા માટે હું રજિસ્ટ્રાર શ્રી પરમાર સાહેબની વિનંતી કરું કે એ ગોહિલ સાહેબનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરે। આભાર સર। આદરણીય રજિસ્ટ્રાર શ્રીનું સ્વાગત કરવા માટે હું મુખર્જી સરને વિનંતી કરું કે આવો અને રજિસ્ટ્રાર શ્રીનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરો। આભાર સર। IQAC કોઓર્ડિનેટર મુખર્જી સરનું સ્વાગત કરવા માટે હું એકેડેમિક વિભાગના રાધિકાબેનને વિનંતી કરું કે મુખર્જી સરનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત અભિવાદન કરે। આભાર સર।
હવે હું આ અભ્યાસક્રમ જેમણે ઘડ્યો છે શહેર પોલીસ અને એને દાખલ કરવા માટે જઈ રહેલી આપણી યુનિવર્સિટી, આના MOU માટે હું યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર પરમાર સર અને રાજકોટ શહેરના DCP પાર્થરાજસિંહને વિનંતી કરું કે તેઓ આ MOU સાઇન કરે. આપણે સૌ તાલીઓથી આ પ્રસંગને વધાવીશું. ખૂબ આભાર સૌ મંચસ્થ મહાનુભાવોનો. આજે મુખ્ય અતિથિ તરીકે અને આપણને આ વિષય સંદર્ભે માર્ગદર્શન આપવા પધારેલા આપણા માનવંતા CP સર બ્રિજેશ ઝા સરને વિનંતી કરું કે આપ આવો અને અમને આ સંદર્ભે માર્ગદર્શિત કરો. આદરણીય ઝા સર. મંચ પર ઉપસ્થિત સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના ઓનરેબલ વાઇસ ચાન્સલર શ્રી અને બાકી મહાનુભાવો, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના શિક્ષણ જગતથી જોડાયેલ બધા ગુરુજનો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ વુડ લાઇક ટુ કોમ્પ્લિમેન્ટ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી ટીમ એન્ડ માય ટીમ who worked hard and prepared this MOU and especially the syllabus. I had gone through the syllabus and I assure you they had made a fine syllabus for cyber crime education or cyber education we can say. I must compliment them for their ideas and whatever they wanted to impart, whatever education they wanted to give to the students, I think they will be successful. I wish them all the best. साइबर एजुकेशन क्यों? ये एक वैल्यू एडेड कोर्स जो तैयार किया गया, इसकी ज़रूरत क्या है? जैसे साहब ने आपको बताया, अलग अलग समय में अलग अलग डेवलपमेंट जैसा होता गया, इंडस्ट्री आया, फिर ट्रैफिक के प्रॉब्लम आए तो ट्रैफिक का सिस्टम बनाया गया, बाकी बताया गया. वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट को अगर हम देखें तो पुलिस डिपार्टमेंट में क्राइम्स एक हमारा इम्पोर्टेंट एंगल होता है. लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्राइम और क्राइम का कंट्रोल, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम जिसको हम बोलते हैं, वो एक हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है. इसमें दो इम्पोर्टेंट जो एरिया है, एक है बॉडी ऑफेंस और दूसरा प्रॉपर्टी ऑफेंस. बॉडी ऑफेंस वर्षों से होता आ रहा है और होता जाएगा. जब तक भी अपने रहेंगे वो लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे, बॉडी ऑफेंस बनता रहेगा. प्रॉपर्टी ऑफेंस भी पहले अलग तरह के थे. पुराने समय में देखेंगे अपने जो कि है तो क्या होता था, तो बकरी चोरी हो गया, गाय चोरी हो गई, मुर्गी चोरी हो गई, साइकिल चोरी हो गया. फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ तो बाइक चोरी होने शुरू हुए,
सोना चांदी चोरी होना शुरू हुआ, टीवी चोरी होना शुरू हुआ, फिर और आगे गए, मोबाइल का ज़माना आया तो मोबाइल चोरी होना शुरू हो गया। बाद में जब अपने और आगे बढ़े तो जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेज आते गए, पहले शुरुआत में सोसाइटी में चीटिंग, विश्वासघात, ये सब कम था। बाद में ये ऑफेंसेस बढ़ने लगे सोसाइटी में, चीटिंग के ऑफेंस बनने लगे, विश्वासघात होने लगा लोगों के साथ में, तो इकोनॉमिक ऑफेंस हमारा बढ़ने लगा। बॉडी ऑफेंस वहीं के वहीं है, लेकिन दूसरा पोर्शन जो था उसका प्रोपोर्शन जो है या परसेंटेज कहें वो बढ़ने लगा धीरे धीरे। और जब एडवांसमेंट्स हुआ, आज की तारीख में जब अपने देखते हैं चारों तरफ क्या है कि कंप्यूटर है, हर चीज़, चाहे डेली यूज का कोई सामान हो, चाहे अपने किसी भी एरिया में जा रहे हो, बैंकिंग लें, फाइनेंस लें, एजुकेशन लें, और भी कोई भी चीज़ ले लें, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये वो सब चीज़ जो कि सब में देखिए तो कंप्यूटर यूज होना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे जब नए डेवलपमेंट हुए तो साइबर के फील्ड में जब अपने आगे बढ़े, इंटरनेट आया और ये आए, तो उसमें क्राइम भी बढ़ना शुरू हुआ। शुरुआत में जो फ्रॉड होते थे वो एटीएम फ्रॉड, एटीएम में से लोगों का जो कि है पैसा निकाल लिया गया, कुछ उसका पिन जान करके किसी भी तरह से एटीएम का क्लोनिंग करके शुरू हुआ। फिर ओटीपी फ्रॉड शुरू हुआ कि आपको कोई ना कोई बहाने से किसी न किसी तरह से फ़ोन करके वो आपका ओटीपी ले लेते थे और फिर ओटीपी पे ऊपर से वो पैसे निकाल लेते थे। बाद में लिंक आने शुरू हुए, कुछ लिंक आया, आपने सोचा कि चलो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, या कुछ ऐसा लिंक भेजा गया जिससे आपको उत्सुकता हुआ कि आप उस लिंक को खोलें और फिर उसमें से आपके पैसे चले गए और वो हुआ। तो साइबर क्राइम जब अपने देखें, साइबर एजुकेशन इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो साइबर क्राइम हमारा बढ़ रहा है उसको हम कैसे रोकें। और रोकने के लिए दो चीज़ होता है, एक होता है कानून, लॉ, जिसमें जो आदमी ये काम कर रहा है उसको हम शिक्षा करते हैं, उसका तपास करके, उसका इन्वेस्टिगेशन करके, उसको आरोपी को अरेस्ट किया जाता है, चार्जशीट किया जाता है, उसको शिक्षा होती है। उसने जो कुछ हमसे लिया है उसका हम रिकवरी करते हैं और जिसका है उसको हम देने की ट्राई करते हैं। लेकिन दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है प्रिवेंशन। अगर हम इसको प्रिवेंट करें, साइबर क्राइम बनने से ही रोकें, तो फिर आगे हमको डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रिवेंशन के लिए ये ज़रूरी है कि सोसाइटी में सब लोग उसके लिए जागरूक हों, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो साइबर क्राइम होते हैं उसको एक तरह से देखें तो हम ब्रॉडली दो भाग में बांट सकते हैं। एक जिसमें कि पैसे का लेती देती या हेरा फेरी कहें, आपसे किसी ना किसी कारण से आपको कुछ लोभ दे के, कुछ लालच दे के, डरा के, धमका के, आपके साइकोलॉजी को पढ़ करके, उसके ऊपर असर करके, और वो आपसे पैसे ले लेता है। और आज के साइबर वर्ल्ड में ये बड़ा मुश्किल होता है, जो कि ठीक है इन्वेस्टिगेशन करके बाद में हम उसको डेप्थ में जाते हैं जब तो पता चलता है कि कौन था, क्या था, लेकिन इमीडिएटली पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन आदमी था। सामने सामने किसी ने पैसे ले लिए तो पता है कि भाई एक्स आदमी लेके गया, यहाँ तो वो पता चला कि अफ्रीका में बैठा होगा और यहाँ से पैसा ले रहा होगा, या हो सकता है कि आपके बगल वाले रूम में बैठा हो और पैसा ले रहा हो और बता रहा हूँ मैं अफ्रीका में बैठा हूँ, आपको पता नहीं चलेगा वो, और वो बाजू वाले रूम में बैठा हुआ है आपके। तो साइबर क्राइम में एक तो पैसा जो है वो इम्पोर्टेंट है, दूसरा कि साइबर क्राइम में दूसरा आयाम इसका जो है वो है जैसे कैरेक्टर एसिसिनेशन, या आपका रेपुटेशन है उसको एसिसिनेशन वो कर रहे हैं, या लड़कियां हैं उनको छेड़ती कर रहे हैं, साइबर स्टॉकिंग जो हम कहते हैं वो कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ जब अपने जागरूक होंगे, लोगों को पता होगा कि ये किस तरह से हो रहा है, और जागरूक होंगे और पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे इस चीज़ का, ठीक है। एक पोर्शन होता है किसी के साथ कोई बनाव बन जाना, लेकिन दूसरा ये होता है कि बनाव बन गया उसके पास, उसको रोकने के लिए, ताकि आपके साथ जो बन गया अब किसी और के साथ ना बने, इसके लिए आप उसको, अगर आप लीगल एंगल से उसको ये करेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी तो ही वो अटकेगा। बाकी जो साइबर फ्रॉड है वो तो रुकने वाले नहीं हैं। जब तक उनको सजा ना हो, जब तक वो अरेस्ट ना हो, तब तक उनके ऊपर कोई उनको फ़र्क पड़ता नहीं है। वो एक जगह करेंगे, वहाँ नहीं सफल हुए, दूसरी जगह करेंगे, 10 जगह करेंगे, 5 जगह सफल होंगे, 5 जगह असफल होंगे वो।
एक गवर्नमेंट ने भी इसके लिए साइबर क्राइम ऑनलाइन पोर्टल और नंबर जो कि 1930 जो है हमारा, उसको जाहिर किया हुआ है। साइबर क्राइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम फैक्टर होता है। आपसे किसी ने कोई पैसा लिया किसी भी तरह से, आप जितना जल्दी हमको इन्फॉर्म करोगे उतना जल्दी हम कार्रवाई करके आपका पैसे को ब्लॉक कर सकते हैं। जब आप 1930 पे कॉल करते हो तो हमारा फिर वहाँ से एक्शन शुरू होता है बैंक्स के साथ। जैसे आज आपके साथ एमओयू हुआ, हमारा बैंक्स के साथ एमओयू हुआ है। हम इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म करते हैं, बैंक उसके अकाउंट को फ्रीज कर देती है। तो उस अकाउंट में जितने पैसे होंगे उतना अकाउंट का पैसा फ्रीज हो गया, लेकिन उसके पहले जो उसने निकाल लिया वो फ्रीज नहीं हो सकता। इसलिए टाइम फैक्टर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप जितनी जल्दी इन्फॉर्म करेंगे उतना पैसा आपका बचने का चांस ज्यादा होगा। आप जितना लेट करेंगे उतना बचने का चांस आपका कम होगा। आपको एक दाखला देखूं इसका, देना चाहूंगा, इसका क्या व्याप है। खाली राजकोट शहर को अपने देखें तो राजकोट शहर में 2023 में करीब 7,000 के आसपास कंप्लेन अपने पास आए थे, जिसमें 35 करोड़ रुपया के आसपास का गबन हुआ था। कुछ लोगों ने इसमें समय सर जब अपने को जान किया तो इसमें से करीब अपने 3.5 करोड़ रुपया, मतलब 10%, 90% तो अभी भी हम नहीं लौटा पाए लोगों को। 10% पैसा हमने जिसका था उसको लौटाने में हम सफल हुए। ये 7,000 जो फिगर 2023 में पूरे साल का था, 2024 में अभी 7 महीना में ये 7,000 फिगर हम पहुंच चुके हैं। 2023 में जो 35 करोड़ के आसपास का हमारा फिगर था पूरे साल का, हम अभी 7 महीने में 40 करोड़ पहुंच चुके हैं। तो कितने तेजी से व्याप बढ़ रहा है साइबर क्राइम का, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। पहले साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं होते थे, पहले सिटीज को और फिर रेंजेस को ये दिया गया, बाद में डिस्ट्रिक्ट्स में भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शुरू किया गया। और आप लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि राजकोट शहर पुलिस ने, राजकोट शहर के जो अग्रणी लोग हैं, यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर के एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट की मदद से एक लेटेस्ट साइबर लैब साइबर क्राइम ब्रांच के अंदर हमारा तैयार हो गया। थोड़े दिन में उसका चालू करने वाले हैं हम उनको, जहां पे लेटेस्ट टूल्स जो है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के, जो अभी तक गुजरात में किसी भी पुलिस के पास नहीं है, वो राजकोट सिटी पुलिस के पास में होगी। तो ये कोर्स तो ठीक है आपके यहाँ चल रहा है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूनिवर्सिटी से कि जो कम से कम जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको साइबर क्राइम लैब का एक बार विजिट कराया जाए। और जो इंटर्नशिप आपका है वो साइबर क्राइम लैब के साथ में कुछ दिनों का अगर हो, खास करके छुट्टी के दिनों में, जब आप गर्मी छुट्टी या कहीं हो, भले 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का इंटर्नशिप हो, तो आपको पता चले कि क्या क्या हो सकता है। और ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगा। आपको पता होगा तो आप 5 और लोगों को बोलेंगे, वो फिर 5 हो सकता है, 5 और को बोले तो वो 25 हो जाएंगे। तो उससे एक अवेयरनेस आएगा और इसमें प्रिवेंशन में हमको मदद मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो ये एमओयू हमने साइन किया उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइबर एजुकेशन के फील्ड में जुड़ेंगे और खुद खाली एजुकेट नहीं होंगे। आपको जो कुछ मिल रहा है उसको आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने समाज में जो दूसरे लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं उसको ये ज्ञान दीजिए, ताकि वो भी उस फ्रॉड से बचें। आप तो बचें, आपके जो निकट लोग हैं, आपके जो अपने लोग हैं, वो भी बचें उससे। तो ही इसका एमओयू का उद्देश्य हमारा सार्थक होगा। जय हिंद, जय भारत। ખૂબ ખૂબ આભાર સર। કેટલી ઝડપે આ ક્રાઇમ, સાયબર ક્રાઇમ વધી રહ્યો છે એની એક આખી ઝાંખી આપણે જોઈ। આભાર સર। હવે હું આદરણીય કુલગુરુશ્રીને વિનંતી કરું કે આવો અને અમને સૌને માર્ગદર્શિત કરો। આદરણીય કુલગુરુશ્રી। આપણા આમંત્રણને માન આપીને અત્રે ઉપસ્થિત માનનીય બ્રિજેશ કુમાર સિંહ,
Parthraj Singh, dignitaries on the dais and dignitary of the dais, તથા પ્રિય વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો, અમુક વસ્તુઓ એવી રીતની હોય છે કે આપણે જે તે વખતે જ્યારે આપણે એના સાક્ષી બનતા હોય ત્યારે એને આપણે ખબર નથી હોતી કે આ આગળ જઈને ક્યાં સ્થિતિમાં પહોંચવાનું હોય છે. આજે આપણા માટે આ એવો દિવસ છે જેની ચર્ચાઓ વર્ષો સુધી પણ એ ચાલુ રહેવાની છે. સાહેબને મેં રિક્વેસ્ટ કર્યું કે તમે અમારા ગુરુકુળમાં આવો. મેં એમ નહોતું કીધું કે યુનિવર્સિટીમાં આવો, એ શબ્દ થોડો ઘસાઈ ગયો છે, પણ ગુરુકુળમાં આવો એટલે એમણે કોઈ પણ જાતના પદ એના કોઈ પણ મોભાના ધ્યાનમાં રાખવા કે સાહેબ અમે આવશું, માત્ર તમે આની ગોઠવણ કરી લેજો, આવવાનું નિશ્ચિત થઈ ગયું છે. અને સર આપણે અહીંયા આવ્યા, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ત્વરિતતાથી નિર્ણય લીધો. આજે જે દિવસોમાં આપણે આગળ જવાના છે એટલે હું જોતો હતો મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ MOU, તો મને એ ઈચ્છા થઈ કે હવે જે પરિસ્થિતિઓ છે, સાહેબે જે રીતની આપણે અહીંયા વાત કરી કે જે રીતના ક્રાઇમો વધવાના છે, તો એ મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એ વર્ડ કદાચ નાનો પડવાનો છે. હવે આપણે મેમોરેન્ડિંગ ઓફ વિઝડમ, ડાપણનું એક સમજદારીનું મેમોરેન્ડમ નથી તૈયાર કરવાનું, પણ દાપણનું એક મેમોરેન્ડમ આપણે તૈયાર કરવાનું છે. ને આવતા દિવસોની અંદર કેટલી બધી બાબતો એવી આવશે કે આપણે આ મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કદાચ નાનું થઈ જાય, પણ જો આપણે દાપણ રાખશું તો યુનિવર્સિટી તરીકે અને એક પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ તરીકે આપણા સમાજની અંદર આપણે વધારે સારી રીતે કામ કરી શકશું. આપણે અભ્યાસક્રમ બનાવીએ છીએ, આપણે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવીએ છીએ, ભણાવશું, પણ મેઇન વસ્તુ છે, મને આ મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં એટલે ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો કે જે ઇનપુટ આવવાના છે, જે પ્રશ્નો આવવાના છે, યુનિવર્સિટી ગુરુકુળ શેના માટે છે, સમાજની અંદર જે પ્રશ્નો આવે છે એ પ્રશ્નોને તાર્કિક રીતે, યોગ્ય રીતે, આપણી સમજદારીથી એને કઈ રીતના ઉકેલ કરી નાખીએ, એના માટે આપણી યુનિવર્સિટીઓ છે. તો હવેના જે આપણે મેમોરેન્ડમ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કર્યું છે, આપણે જે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવશું, મને એ બહુ સારી વાત લાગી કે આપણે એ લેબોરેટરીની અંદર સાહેબે આપણે આમંત્રણ આપ્યું ને આપણે મેં સાહેબને હારે કુંભારાણા સાહેબ અને અતુલભાઈ સાથે મેં એ ઇશારાની અંદર કર્યું કે આ બાબતની અંદર આપણે કંઈક વિચાર કરવો જોઈએ. અને એ ડિપાર્ટમેન્ટ માત્ર નહીં, બધા જ લોકોને માટે આપણે આ જે લેબોરેટરી છે એનો અભ્યાસનો વ્યવસ્થાનો કંઈક વિચાર કરશું. બીજી લાંબી વાત ન કરીએ અને આ કાર્યક્રમ જે થયો આપણે એના સાક્ષી બન્યા છે અને એની ભવિષ્યમાં ખૂબ લાંબી અસર છે. અને આપણા ઉપર જે NAP દ્વારા રાષ્ટ્ર પ્રધાનમંત્રીએ જે આપણા ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો છે એને આપણે આગલા દિવસોમાં ચરિતાર્થ કરીએ. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય કુલગુરુશ્રી. આપણે કાર્યક્રમના સમાપન તરફ જઈ રહ્યા છીએ. સમાપન કરીએ એ પહેલાં ખાસ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી પરિવાર, રાજકોટ શહેર પોલીસ અને એમની આખી ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. આખો સિલેબસ આપણને ડિઝાઇન કરી આપ્યો અને અહીં ઉપસ્થિત રહીને આપણને સૌને પ્રેરિત પણ કર્યા, એ માટે ફરીથી એમનો આભાર. આદરણીય કુલગુરુશ્રીનો પણ આભાર, રજિસ્ટ્રાર શ્રી, IQAC કોઓર્ડિનેટર શ્રી અને આપ સૌનો યુનિવર્સિટી પરિવાર વતી હું આભાર માનું છું. અને આપણે સૌ આપણા સ્થાનથી ઊભા થઈ રાષ્ટ્રગીતના ગાન સાથે આ કાર્યક્રમ સંપન્ન કરીશું. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे
जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की वंदे